Hello students, my name is राकेश कुमार पांडे. आई एम योर फिजिक्स टीचर. आज मैं आप लोगों के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसके डेरिवेशंस है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या. एक्चुअली ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये मोशन in two-dimensional plane होता है. Whenever an object is moving in two-dimensional plane and the coordinate of the object changes in x and y axis both, then the motion of the object is called projectile motion. यहाँ पे आपने देखा ये जो डायग्राम है, इसमें जब भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. हमने क्या किया, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमने ये सपोज दैट ये ओरिजिन है, यहाँ से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया. तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इस एक्स वाई प्लेन में क्या करेगा, मूव करेगा, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है ये एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, और वाई डायरेक्शन के लॉन्ग क्या होता है, वेरी करता है. प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेते हैं. कंडीशन ये होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी हम देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो एयर के रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे नेग्लिजिबल ले लेंगे. फिर अर्थ के कर्वेचर को या फिर अर्थ के मोशन को हम ये कंसीडर नहीं करते कि प्रोजेक्टाइल पर क्या करे, कोई असर ये डाल रहा है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप का होता है. एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. जब भी हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तब ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल motion. Whenever we project any object that is inclined with horizontal axis, then the motion of the object is called oblique projectile motion. Suppose that this is a plane and this plane is making theta degree with horizontal axis, and we project the projectile in this way. Then such type of projectile is called oblique projectile motion. We have to understand that what type of path followed by the projectile. From the given figure, if any projectile is projected from this place, then this projectile follows this path. This path is called the path of the projectile or trajectory of the projectile. And from the given figure you can see that the path of the projectile is parabolic in nature. What I mean to say that the path of projectile is now students, we have to understand the vertical and horizontal component of the velocity. So horizontal component. Horizontal component, it means the velocity of the object along x axis is called horizontal component, and the velocity along horizontal component remains constant in entire motion. So we can write that ux equals to u cos theta. Here ux is the component of velocity along x axis. Now we have to understand it is constant.
You should keep it in mind that the horizontal component remains constant during entire journey. Now we have to understand about the vertical component. Vertical the component of velocity along y-axis is called vertical component, and the velocity of object along vertical direction it changes from time to time. Its velocity of object from this point to this point decreases gradually and it becomes zero at the highest point, and after that its velocity along y direction increases gradually. So vertical component of velocity uy equals to u sin theta. It is variable because its value is not constant during the motion. Now we have to understand the equation of path of the projectile. Here you can see that the path of the projectile is parabolic in nature, and this path of the projectile is called trajectory, and the equation of trajectory is parabolic in nature. Now we have to derive the equation of trajectory. As we know that the displacement along displacement along vertical direction y equals to u sin theta into t minus 1 upon 2 gt square. As you know that from the basic equation of motion that h equals to ut minus 1 upon 2 gt square when object moving in upward direction. Now we have to find the value of t. As we know that in case of horizontal motion, horizontal displacement, horizontal displacement x equals to u cos theta into t. Now we have to put this value in this equation. From given that we can see that t equals to x upon u cos theta. Now we have to put this value in this equation. Y equals to u sin theta into x upon u cos theta minus 1 upon 2 g into x upon u cos theta square. From this we can see that so x sin theta upon cos theta minus 1 upon 2 g x square upon
u square cos square theta. Therefore x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. So we have finally reached at this equation. This equation